write in the comments. Yes sir, you're audible. So today is 21st June. आज 21 जून है, and you can see from the first page I have put an image to say that today is actually International Yoga Day 2023. शायद आपको पता होगा, मैंने in fact 1 or 2 days back also I discussed it about International Yoga Day. So what you are supposed to know is please tell me the theme of International Yoga Day in the comment section. If you know in the right now, write it in the live chat. Otherwise after the class is over, write it in the comment. International Yoga Day जो कि आज है 21 जून का है, उसकी थीम क्या है? सेकेंड चीज आपको बताना है, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड जनरली बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. आयुष मिनिस्ट्री आप जानते होगे, है ना? इसका फुल फॉर्म भी कुछ होता है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी. सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट हु इज द मिनिस्टर ऑफ आयुष? अब आपको ये बताना है कि आयुष मिनिस्टर कौन है, उनका नाम बताना है, और ये बताना है कि इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या है. सो द टू क्वेश्चंस इज देयर. Who is the Minister of Ayush and what is the theme of International Yoga Day 2023? Yes, very good. Priya Chavan has answered it correctly. Very good. So yoga for Vasudev Kutumbakam. Vasudev Kutumbakam is the right answer to this question. Kutumbakam. Okay. Okay. And the Minister of Ayush. Who is Minister of Ayush? Yes, Renu Bala has answered it correctly. Very good. So that Mr. Sarbanand Sonowal. Sarbanand Sonowal is actually from Assam. He is the former Chief Minister of Assam. He is having Ministry of Shipping also and Ministry of Ayush both. So International Yoga Day, since it is today, it becomes very important. अच्छा, एक और homework है. Go and find out. Vasudev Kutumbakam has been taken from which religious literature? कौन सी religious किताब से वासुदेव कुटुंबकम लिया गया है, आपको ये बताना है. Go and find out. That's a homework. ठीक है? Yes. Now, so let's talk about the first page article. चूंकि थोड़ा सा मैंने योगा पे डिस्कस कर लिया because आज था. So let's start with actually 21st June आज है, and 21st June, that is Wednesdays today. So let's discuss this article. Supreme Court clears deployment of central forces in Bengal for local polls. This will be discussing. Then here it is an article, Assam Rifles plan to secure lifelines of Manipur Hills. So these are the two important articles. We will be discussing it. So पहले ये discuss करते हैं ये क्या है. I had taught you in the yesterday's class, जो yesterday class थी, that is 20th June class. I had discussed it that the Calcutta High Court had passed an order saying that central forces मतलब यहाँ पे CAPF कह सकते हो, Central Armed Police Forces, like you can say BSF, CRPF, CISF, and ITBP, and so these are CAPF, Central Armed Police Forces. Okay, so the Calcutta High Court passed an order saying that CAPF should be deployed in the Bengal while conducting local polls. Local polls मतलब third tier government, है ना? So there are 3 tiers. One is union government, the second is the state government, and the third tier government means urban local bodies and panchayati raj institution. I had given the examples also like panchayat, mukhya, sarpanch, ये सब का चुनाव होता है. Then urban local bodies में like mayor, ward councillor, ward commissioner, these do come here, है ना? तो that is what is being talked about. So उसके लिए क्या हुआ था कि when Calcutta High Court passed an order, the Bengal State Election Commission and the West Bengal government moved Supreme Court that this order should be stayed, but the Supreme Court said it upheld the order. लिखा ना है, upheld Calcutta High Court's order. Upheld का मतलब होता है okay करना, okayed it, ना? मतलब said that the Supreme Court said that the Calcutta High Court order is correct and fine, and it allowed for central security forces to enter in West Bengal to ensure free and fair elections. ताकि 8 जुलाई को फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके. ओके, सो द वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिस बीवी नागरत्न एंड मनोज मिश्रा रीजन दैट वेस्ट बंगाल हैज अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग पोल्स एंड ऑल. ठीक है, सो इफ यू सी इन वेस्ट बंगाल व्हेनेवर इलेक्शंस हैपन इन द पास्ट आल्सो, पोल्स मतलब वही इलेक्शंस, देयर हैव बीन हिस्ट्री ऑफ वायलेंस. कई बार चुनाव जो पहले हुए हैं तो वायलेंस वगैरह हुआ है, इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस को होना जरूरी है.
So that is what it is. Okay, I think it's clear. Holding an election cannot be a license for violation, says the judge of Supreme Court. There has been a history of violence and all. हाँ, मतलब ये है कि चुनाव कराने का ये मतलब नहीं है कि लाइसेंस है कि वायलेंस हो. Violence should not happen during election. That is very, very important because it is the festival of democracy. Election is called as festival of democracy, right? And इस तरह का word लिखा जाता है. So that is why there should not be any violence in the festival of democracy. That you should be knowing. Yes, good morning everyone. Good morning guys. Okay. Now there's a question for you. किसी ने आंसर किया है वासुदेव कुटुम्बकम का. वेरी गुड. गौरी इज राइट. आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि वासुदेव कुटुम्बकम कहां से लिया गया, फ्रॉम विच उपनिषद. सो महा उपनिषद. वेरी गुड. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम महा उपनिषद. गुड. आई एम हैप्पी दैट यू ऑल आर लर्निंग इट, है ना. सो अच्छी बात है कि आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो. ठीक है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज फेमसली कॉल्ड एज सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. योर ऑप्शंस आर Assam Rifles, CRPF, CISF, ITBP. What is the right answer to this question? Sentinels of the Northeast कौन सी फोर्सेस को कहा जाता है? CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP मतलब इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस. What is the right answer? ये काफी फेमस है एक्चुअली. तो सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट असम राइफल्स को कहा जाता है. A is the right answer. Yes, रश्मिकांत, गौरी, प्रिया, चवन, रेणु, Vandana, Gopal, Goyal, yes, Zoya Khan, you all are right, Vandana. So Assam Rifles is called as Sentinels of the Northeast, your friends of the hill people, that's called as. It is the oldest paramilitary force in India, ये भी पता होना चाहिए. Oldest paramilitary force in India, originally raised in 1835, मतलब we are talking about British time. So a militia to protect tea garden and fertile plains of Assam. तो ये एकदम British के time पे setup किया गया था. Just have an idea about that. Okay, so first page में article, the Assam Rifles plan to secure lifelines of Manipur hills. So the article says that it is planning to secure a bridge on National Highway in South Manipur, the only route for essential supplies of Churachandrapur in the violence hit state. So he's talking about National Highway 102B, which connects Manipur with neighboring Mizoram. तो थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं. Here is the actually the northeast of India. तो this is actually Manipur. ठीक है. और ये है मिजोरम. Okay. So this is Manipur. This is मिजोरम. Okay. अब तो यहाँ से कोई ट्रक्स वगैरह आ रही है तो नॉर्थ ईस्ट में अगर ट्रक जाएगी तो ऐसे ही जाएगी ना, अगर रोड से, और फिर ऐसे मणिपुर या मिजोरम में जाएगी ट्रक. सो मान लो यहाँ से आ रही है तो ट्रक इज कमिंग फ्रॉम हेयर. ओके, लेट मी मेक इट विद सम अदर पेन. एक मिनट. जैसे फॉर एग्जाम्पल द ट्रक इज कमिंग फ्रॉम हेयर दिस रूट. ओके, सो इट विल गो तो यहाँ से फिर देन इट विल गो टू मिजोरम. ओके, सो दिस विल बी द रूट. तो ये यहाँ से आएगी ना, तो यहाँ पे ये जो जगह ना चंद्रचांदपुर. ओके, सो हेयर दिस नेशनल हाईवे गोज 102B. ओके, सो इट इज सेइंग इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रक्स अगर यहाँ से आ रही इम्फाल से चंद्रचांदपुर, देन इट विल गो टू ऐजवाल. ये ऐजवाल मिजोरम हो गया. So this region is actually Mizoram. ये वाला जो है इसके नीचे, this is Mizoram. Okay, and this one is Manipur. ये वाला मणिपुर है. So this is actually the violence hit region. ये वाला this region. इसको रेड से बनाते हैं. Okay, so it is important to protect this region so that अगर कोई ट्रक्स आ रही है तो नीचे जा सके, मिजोरम की तरफ जा सके और यहाँ तक ही पहुंच सके. So यहाँ पे कहीं पर भी नेशनल हाईवे which is being talked about, NH, कौन सा NH है? 102B. So somewhere here is 102B. So that has to be protected by forces. So that is why Assam Rifles have decided to protect this region. ठीक है? Is it clear? आप समझ गए what is being talked about here? Okay. Now, so this is the logo or actually the flag of Assam Rifles. And see, इसमें थोड़ा सा यूनिक बात है. जनरली जितने भी CAPF है, all the CAPF are actually completely under control of Home Ministry, not Defense Ministry. ये आपको पता होना चाहिए. Okay, like we have CRPF, CISF, ITBP. These are not under Defense Ministry. These are under Home Ministry. Ministry of Home Affairs के अंडर में आता है. Defense Ministry के अंडर में Army, Air Force, Navy ये आती है. Okay, so you should be crystal clear that CRPF, CIPF, CISF, ITBP, these are under Home Ministry. जितने भी Central Armed Police Force होती है. But Assam Rifles के बारे में थोड़ा सा यूनिक है.
The uniqueness is that administration is under Home Ministry, but operational control is under Defense Ministry. So basically, Assam Rifles is actually partially controlled by Home Ministry, partially by Defense Ministry. इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है? Is it clear? Okay. Now, there's a question for you. Who is the Director General of Assam Rifles? Your options are Lieutenant General P.C. Nair, Lieutenant General M.V. Sujendra Kumar, Lieutenant General Rana Pratap Kalita, Lieutenant General Surendra Singh Mahal. Your time starts now. I know ये थोड़ा सा tough होगा, but still I'm waiting anyone of you if you could answer it. Director General of Assam Rifles कौन है आपको बताना है? Yes, the right answer is Lieutenant General P.C. Nair is the right answer. Param Khoj has answered it. Priya Chavan has also answered it. Very good. देखो ये LTG in short में लिखा है, ये और ये same चीज है, ठीक है? Both are same thing. Yes. Gopal, Goel, Sani, Ansari, Ranjana, Vandana, Gauri, Param Khoj. You all are right. जिन्होंने भी A answer किया है, you all are right. So Lieutenant General Pradeep Chandra Nair is actually the Director General of Assam Rifles. ठीक है? Okay. First page में एक article थी, PM Modi lands in US, many events in pipeline. So this we will be discussing once the news will come. ठीक है? तो हो सकता है कल तक और बात आए. So let's wait for that, है ना? कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे for example 21st June is there, International Yoga Day event will be celebrated there. दूसरी चीज ये है कि who is the permanent representative, India's permanent representative to United Nation. ठीक है? So her name is Ruchira Kamboj. That you should be knowing it. Okay? Okay? So these are the facts you should be knowing it. है ना? That is what is being talked about. Okay, before moving on, there's an announcement. We are providing a 90% scholarship. The test is on 25th June, 11 a.m. in the morning. If you qualify the test, you will get up to 90% scholarship on this paid course. So this course is actually, we are providing 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 plus mock test, monthly e-magazines, etc. If you have any question, call on this number 95388-95678 पे call कर सकते हो. Okay? Yes. Now, this course is, we are providing a 3-day free trial for that also. So the link is given in the description from where you can register for this course. 3-day free trial आप देख सकते हो, है ना? So आप app download करो, go to CLAT section, there also you will get a lot of these things and all. The next one is editorial. अब इसमें चलते हैं. People on Emerald Isle waiting with दूसरास and all. देखो, this article, this main article is written by Mr. Gopal Krishna Gandhi. He is actually grandson of Gandhi ji. He's a grandson of Mahatma Gandhi. Okay. He is a former ex-bureaucrat, ex-IAS officer, former governor of West Bengal, former diplomat and all. So he has taken a lot of positions and all. तो इन्होंने article लिखी है because I mean he has gone very much in detail about Sri Lanka. तो उतना detail आपको नहीं जानना है, ठीक है? But have a basic idea. He's talking about George Bernard Shaw's visit to Ceylon. Ceylon जो है ना former name of Sri Lanka है. Former name of Sri Lanka. ये सब school days में पढ़ाया भी जाता है. Old name of Sri Lanka is Ceylon and all. So he's actually talking about ye. This actually has been taught in I think class 9th if I'm not wrong. Class 9th या 10th में NCERT के political science में था है ना. That is talking about the concept of majoritarianism in Sri Lanka and comparison with Belgium. I hope you are aware of that. ठीक है? Majoritarianism in Sri Lanka in comparison with Belgium. ये दिखाया गया कि Belgium became successful in handling ethnic diversity, whereas Sri Lanka was not that much successful. ये school days में पढ़ाया गया था ना, उसी की यहाँ पे बात हो रही है. So he's talking about the same कि श्रीलंका में north eastern region में यहाँ पर श्रीलंका के mostly you will find Tamils people which is in minority and the rest is actually Sinhalese community, है ना, which are actually in majority and all. ये स्कूल में पढ़ाई भी किया होगा in NCERT books and all. So that is what he's talking about कि 74%, 75% you can say Sinhalese हैं. बाकी तमिल्स चाहे तो श्रीलंकन तमिल्स है या इंडियन तमिल्स हैं, around 15% you can say, है ना. So then there are other communities, but mostly they either it's majority Sinhalese and minorities is Tamil. तो एक famous cricketer भी हैं, he's talking about that. So M. Muralitharan is a very famous spin bowler. I guess he has now retired if I'm not wrong. Spin bowler, बहुत famous spin bowler है.
वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्लास बॉलर, तो इनका यहाँ कोट भी कर रहे हो देखो, Muthaiya Muralitharan is one of 4.2% Sri Lanka's population called Indian Tamils. So he also belongs to Tamil community. That is the minority community in Sri Lanka. तो इसी की वो बात करें. अब देखो इसमें he has gone very much in detail about Sri Lanka. उतना डिटेल नहीं जाना है श्रीलंका के बारे में, पूरी हिस्ट्री नहीं जाना है, बट हैव अ बेसिक आइडिया बिकॉज श्रीलंका इज आवर नेबर, सो बेसिक आइडिया शुड बी देयर. ठीक है. अच्छा, ये सब आपको पता है ना कि यहाँ पर पार्क स्ट्रेट है, आई होप यू आर अवेयर, है ना. पार्क स्ट्रेट इज देयर. यहीं पे एक जगह है रामेश्वरम, एंड रामेश्वरम is famous because a very famous person from India was from here. उनका नाम बता सकते हो कोई? Can anyone tell me? A very famous person, I would say ex-president of India, was from this place, Rameshwaram. किसी को पता हो तो आंसर बताइए. I'm waiting for that. Okay, so president को ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि श्रीलंका में मतलब प्रेसिडेंट कौन है. सो प्रेसिडेंट इज रनिल विक्रमसिंघे, प्राइम मिनिस्टर इज दिनेश गुणवर्धना. ठीक है. सो ये दोनों पता होना चाहिए. ठीक है. जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहां माना जाता है. ठीक है. जैसे इंडिया में वेस्ट मिनिस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी है, सो सिमिलरली देयर इज सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम देयर. यस, वेरी गुड, गुड. रामेश्वरम से कलाम साहब जो है, मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना. He was from Rameshwaram. Very good. Yes, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है. इनके किताब है विंग्स ऑफ फायर. सो कभी मौका मिलेगा तो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, इनिशियल फ्यू सेक्शंस जो उनकी लाइफ के बारे में आप पढ़िएगा. आई मीन इट्स अ क्वाइट मोटिवेटिंग बुक. Whenever you get a chance after the exam, read the initial portion of Wings of Fire, where he actually talked about his own life struggle and all. तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने डिस्कस किया है. सो इट्स अ गुड मोटिवेटिंग बुक, है ना. यस, गो एंड रीड. हाँ, किसी ने फुल फॉर्म भी लिख दिया APJ का. वेरी गुड. ओके. यस. तो अब इसमें हम ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं अब श्रीलंका के बारे में. द बेसिक आइडिया इज मोर देन एनफ. ही हैज गॉन वेरी मच इन डिटेल. उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट साइड में एक आर्टिकल है, वेलकम स्टेप, यूएस एंड चाइना मस्ट कंटिन्यू टू कीप डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन. अब देखो एक्चुअली क्या है, आई होप यू आर अवेयर, yesterday we had discussed it that Xi Jinping meets Blinken as China US agrees to stabilize relation amid tension. ये मैंने कल पढ़ा था ना, ये वाली आर्टिकल. I have told you कि from US, यहाँ से बीजिंग, यहाँ पे ना कहीं पे, बीजिंग इन चाइना, Anthony Blinken is on a visit. Anthony Blinken is US Secretary of State. Secretary of State is very similar to, you can say, Foreign Minister of USA, na? So he is actually on a visit to China, and he actually met Xi Jinping. He is the president of China. ये आपको पता होगा. ठीक है. Okay. Yes. ठीक है ना. तो actually he visited there and all. So hopefully actually बात ये हो रही है stabilize relation. मतलब actually everything is not fine as far as US-China relation is concerned. You all know. ठीक है ना. So they actually have gone there to, we are expecting that things would become more better and all. ठीक है. The US and China this week took a much needed step towards repairing. तो repairing क्यों? इसका मतलब चीजें ठीक नहीं तभी तो. When do we repair something? When things are not fine, when there is a snag, है ना, मतलब कुछ चीज खराब हो जाती है तब उसको हम रिपेयर करते हैं. So that is why repairing word is used here. Repairing the relations. Anthony Blinken, the US Secretary of State, visited Beijing. First visit by US Secretary of State since 2018. 2018 के बाद 5 साल बाद कोई US Secretary of State चाइना गए. The main takeaway from the visit, during which he met Chinese President Xi Jinping, मैंने दिखाया भी कि Xi Jinping US Chinese President से मुलाकात की, है ना. So both met each other. Was there agreeing on the need for stability in ties. Mr. Xi told Blinken that the international community was concerned about the current state of relations and does not want to see the conflict of confrontation. Okay, so that is what they said कि हाँ confrontation नहीं होना चाहिए. Confrontation मतलब क्या होता है? tussle एक तरह से, है ना. So they do not want that tussle should happen unnecessary. Mr. Blinken said that following the talks, both agree on the need of to stabilize our relationship. So Blinken साहब ने भी ये कहा that we should stabilize our relationship. Unnecessary conflict should not be there, है ना.
Fair differences no doubt remain, and the visit expectedly did not yield breakthrough on contentious issues of US export curbs on Taiwan. अब देखो ताइवान के मामले में कुछ खास बात नहीं हो पाई. Now, so here is US, here is China, this is Taiwan. Now, there is a long drawn history as far as Taiwan is concerned. China do not recognize Taiwan. China Taiwan को country नहीं मानता. I mean, China believes that it is their part and all. तो बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री, उस पर नहीं जाना है. But why is Taiwan so important for US? That actually the first reason is कि US is having good relation. Why? Because to counter China एक तरह से. दूसरी चीज है, Taiwan is famous for semiconductors, making semiconductor chips and all, जो कि which is very important for US, है ना. अब US क्या, सबके लिए semiconductor is actually the core of all the electronic technologies. जितने भी टेक्नोलॉजीज आज करें, मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, everything you will find the use of semiconductors, and that is why also Taiwan is very very important for USA and all. ठीक है, तो एक चीज ये. फिर कुछ लास्ट ईयर में स्पाई बैलून का इंसिडेंट हुआ था, that a Chinese spy balloon went to the USA. It was struck, USA actually shot down, है ना. आपने सुना होगा एक बैलून जो है वहां जा रहा था, तो यूएस ने शॉट डाउन कर दिया, कहा कि ये स्पाई बैलून है, चाइना ने भेजा है, समथिंग लाइक दैट. Actually, you can say had happened last year. So that is what also is being talked about. Mr. Blinken visited in February and the shooting down of Chinese spy balloon, है ना, ये सब की बात उन्होंने लिखा है. Okay. Asked in Beijing how the Biden administration will continue with the attempt to fix relationship with China as the domestic discourse likely worsened in the lead up 24 election. He argued that continued engagement was the best avenue to protect US interests, including on trade. तो उन्होंने कहा 2024 में elections would be happening and all, है ना. In the next year, November, December, there will be elections in USA. तो इससे भी तो रिलेशनशिप असर करता है ना. फॉरेन पॉलिसी इज आल्सो अफेक्टेड बाय एक्चुअली इलेक्शंस इन एनी कंट्री, है ना. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो उन्होंने कहा कि वी विल कंटिन्यू, मींस द एंथनी ब्लिंकन सेड दे विल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट इंक्लूडिंग ऑन ट्रेड एंड ऑल. तो यही तो मेन चीज होती है. ऑल द एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री इज गवर्न्ड बाय नेशनल इंटरेस्ट, है ना. किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट पर डिफाइन करती है. मतलब किससे हमको किस कंट्री से रिलेशन रखना है या नहीं रखना है, वो डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री को फायदा होगा कि नहीं. दैट इज द कोर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑल. द चैलेंज नाउ इज वेदर दे सस्टेन. अब इसको इतना पढ़ लेना, इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है कि क्या क्या चैलेंज है कि रिलेशनशिप अच्छा कर सकते हैं कि नहीं, वेदर दे कैन इम्प्रूव द रिलेशनशिप और एंड ऑल. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना. सो दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है, इसको आप जस्ट गो एंड रीड इट. लेट्स सी. अभी पूरी बात निकल के पीएम मोदी इज एक्चुअली ऑन अ विजिट टू यूएसए. यहाँ भी बात भी करें कि मोदी जी एक्चुअली राइट नाउ इज इन यूएसए. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. ठीक है, अभी 1-2 दिन रुक जाते हैं, एंड इफ देयर इज एनी आउटकम दैट वुड कम, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, है ना. नाउ देयर इज एन आर्टिकल, रावलपिंडी गेन्स द अपर हैंड इन ट्रबल्ड पाकिस्तान. तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल न्यूज ऑफ पाकिस्तान है, तो इससे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना है. सम बेसिक फैक्ट्स यू शुड बी नोइंग इट. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान वाज अरेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस. इसमें डिस्कशन है उसका इस आर्टिकल में. दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. योर ऑप्शंस आर भुट्टो केस, अल कदीर ट्रस्ट केस, मुशर्रफ हाई ट्रीजन केस, आसिया बीवी केस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बताइए. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाना. यस. Imran Khan he was arrested, I think 1 or 2 months back. It was in the news few months back, है ना. So in which case, yes, Gauri, Sani Ansari, Priya Chavan, Gopal Lamra, yes, you are right. Al Qadir Trust case, it became actually very famous at that time when he was arrested in Al Qadir Trust case and all. Okay, so B is the right answer. Yes, Alia, Priya Chavan, Param Khoj, you all are right. Okay, so that is what is being talked about after the violent events of May 9 in Pakistan, following Pakistan Prime Minister's arrest in an alleged corruption case. तो इसी सब की बात हो रही है, अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है. Now there is another question for you. Imran Khan belongs to which political party? Your options are Pakistan's People's Party, Pakistan Tehreek-e-Insaf, Pakistan Muslim League Nawaz, Awami National Party. What is the right answer? सिर्फ फैक्ट्स पता होना चाहिए, उतना बहुत डिटेल में नहीं जाना है. I mean that's not important, the internal
सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, बट हाँ बेसिक आइडिया होना चाहिए. यस, ही बिलोंग्स टू पीटीआई. इट इज इजी टू रिमेंबर. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. दिस इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इमरान खान. हियर इट इज रिटन. सो इनफैक्ट अगर आप देखोगे इस एडिटोरियल में यहाँ उन्होंने मेंशन भी किया है. द ऑथर हैज मेंशन्ड अबाउट पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड ऑल, है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट. तो कुछ बेसिक चीजें आइडिया होना चाहिए. अब इसमें इतना डिटेल गया है. व्हाट इज द रोल ऑफ इज टॉकिंग इज कोटिंग द पाकिस्तान आर्मी चीफ, तो उतना अब नहीं जाना डिटेल. ओके, जस्ट हैव एन आइडिया. फैक्ट्स वगैरह पता होना चाहिए कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान इज जनरल सईद आसिम मुनीर. सो बस ये सब फैक्ट्स पता होना चाहिए. ठीक है, हु इज द प्रेसिडेंट, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. सो दीज आर बेसिक फैक्ट्स. दैट्स इट. ठीक है. Okay, let's talk about sideways article थी embedded hate. America's culture over reliance on police to maintain order is problematic. देखो, actually this article is about the George Floyd incident. ये आपको पता है? You remember that incident? किसी को याद है? देखो मैंने पूरा फोटो नहीं लगाया. इसमें ये था कि George Floyd was actually a black person and he was actually you can say pushed to death, crushed to death by a white police officer. तो उसमें काफी हंगामा हुआ था एट दैट टाइम. इट वाज वेरी मच इन द न्यूज एंड ऑल. सो एक्चुअली उस टाइम पर ये सब ट्रेंड होने लगा था, ब्लैक लाइव्स मैटर एंड ऑल. यू रिमेंबर दैट आई गेस. हाँ, यस, ब्लैक लाइव्स मैटर. हालांकि पहले से चल रहा है ये वाला मूवमेंट, बट एट दैट टाइम इट बिकेम वेरी फेमस. हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर एंड ऑल. सो दैट इज व्हाट इट वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट. सो बेसिकली इसमें ये आया है कि रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट ऑन फाइंडिंग्स ऑफ अ स्वीपिंग 2-year इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इनटू वायलेंस एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन where George Floyd, an unarmed African American, was murdered in May 2020 in police custody, found that officers had used excessive forces, unjustified deadly forces. तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो रिपोर्ट निकाली उसमें ये कहा गया कि एक्सेसिव फोर्सेस यूज किया था. मतलब जो पुलिस ऑफिसर था उसने, यानी जितना रिक्वायर्ड नहीं, मोर देन रिक्वायर्ड फोर्सेस वाज यूज्ड एंड इट वाज अनजस्टिफाइड डेडली फोर्स. यानी उतना फोर्स यूज करना गलत था और ये डेडली था, उसकी मौत हो गई. नॉट सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो इसी की वो बात कर रहे हैं ना. So the report silence is underscored by the outpouring of public anger and protests against racism and all, violent act by police on minorities and all. ठीक है. So अभी minorities मतलब the black people are actually considered as minorities there. So a lot of protest has happened at that time of racism. Racism of the difference between white and black people and all. So that is what is being talked about. The inquiry not only found numerous examples of excessive forces, unlawful discrimination, First Amendment, etc. तो इसमें ये बताया कि इंक्वायरी ने देखा कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं. A lot of incidents are there where excessive forces were used and all. So that is what, and racism were there by the police officials and all. So that is what is being talked about here. इसी की बात कर रहा है, इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है. ओके, तो अब इसको पढ़ लो. होपफुली मैं बेसिक चीज बात कर ली. रेशियल प्रेजुडाइस मैंने, देखो प्रेजुडाइस अगर आप समझते हो ना, प्रेजुडाइस मींस जजिंग समवन इवन बिफोर नोइंग समवन, है ना. पहले ही से जज कर लिए. जैसे जनरली व्हेन देयर इज अ रेशियल सुप्रीमेसी इज देयर, अ व्हाइट पीपल जजिंग अ ब्लैक पीपल इन अ रॉन्ग वे. सो दैट्स प्रेजुडाइस. आई एम नॉट सेइंग कि ऑल पर्सन डू दैट, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. सो रेशियली प्रेजुडाइस मैनर मींस कि अ व्हाइट पुलिस ऑफिसर believing that a black person will always be a criminal. That's called as racial prejudice manner. यानी उसने पहले ही सोच लिया है कि अगर वो ब्लैक होगा तो बुरा ही होगा. तो इसको कहते हैं कि प्रेजुडाइस, यानी पहले ही से जज कर लेना, प्री जज कर लेना. Okay, so there have been incidents of racially prejudiced manner. That is what is being talked about. Okay, तो इसको पढ़ लेना, है ना. Then semiconductor fab, the unfinished agenda. Again, फैब मतलब यहाँ पे फैब्रिकेशन से रिलेटेड है, मतलब बनाना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर. अगेन ही हैज एक्चुअली कुछ दिन पहले भी उन्होंने आर्टिकल लिखा था. आई होप यू आर अवेयर. देखो, एक होता है कंडक्टर, एक होता है बैड कंडक्टर, ठीक है, एक होता है बीच में सेमीकंडक्टर. सो व्हाई इज सेमीकंडक्टर सो इंपॉर्टेंट? तो अगर आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, सो दीज आर एक्चुअली द मेटल्स विच आर कंडक्टर. ये सब नॉन कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर. नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर. यहाँ पे जैसे गैलियम, जर्मेनियम, फिर यहाँ पे सिलिकॉन होगा कहीं पे. सो दीज आर एक्चुअली कंसिडर्ड एज
सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, ठीक है, वाई देखो यहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, दीज आर सेमीकंडक्टर्स. नाउ व्हाई सेमीकंडक्टर सो इंपॉर्टेंट? सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? नाउ दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले हम बताते हैं. अगर आपने कंप्यूटर देखा होगा, सबने देखा होगा, आई गेस ऑल ऑफ यू हैव सीन दिस कंप्यूटर. अगर आप इसको खोलोगे, दिस इज सीपीयू, राइट? Now inside the CPU, the main thing which actually controls the computer is called as motherboard, है ना? हाँ, तो दिस इज मदरबोर्ड. ऐसी कुछ फोटो दिखता है ना, अगर आप कंप्यूटर सीपीयू खोलोगे ना कभी, तो ऐसा दिखेगा. नाउ इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ आईसीज. ये सब दिख रहा हो, ये सब चिप है, ये इंटीग्रेटेड चिप्स इसको कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप्स, इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है. इसके अंदर इनसाइड इट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ट्रांजिस्टर्स. छोटा छोटा ट्रांजिस्टर होता है. ऐसे हम लोग रेडियो को ट्रांजिस्टर कहते हैं नॉर्मल टर्म्स में, बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है. एकदम माइन्यूट, बहुत छोटा लेवल का होता है ट्रांजिस्टर, दैट्स कॉल्ड, ठीक है. तो वो सब जितने भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो सब सेमीकंडक्टर से बनते हैं. तो ये जो ये सब बनाने में सेमीकंडक्टर्स का सबसे अहम रोल होता है. ओके, सो सेमीकंडक्टर इज यूज्ड इन मेकिंग दीज चिप्स, दीज मदरबोर्ड्स, ठीक है. और ये सब जगह यूज होता है, हर जगह, मतलब कंप्यूटर, मोबाइल, यू विल फाइंड एवरीवेयर द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल, है ना. So that is what you should be knowing it. The government's mission of semiconductor mission is there. अभी तक right now we are actually importing it, but we are having a plan. ये plan भी है government का, है ना. National semiconductor mission is there. If it becomes successful, it is a very good thing. But generally हम लोग ज्यादातर चीज अभी import कर रहे हैं, but ये अगर successful हो गया, मतलब made in India semiconductor chips बनने लगे, so that would be a very good thing, है ना. So that is what the idea is, है ना. ठीक है. ओके, सो द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट वाज मेड इन 2007. तो अब हिस्ट्री में जा रहे हैं, गोइंग इन हिस्ट्री एंड टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स, है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. ओके, इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर फैब इज वन ऑफ द रिस्कीएस्ट. बिलियंस ऑफ डॉलर्स नीड्स टू बी रिकवर्ड बिफोर द टेक्नोलॉजी बिकम्स ऑब्सोलीट. हाँ, एक प्रॉब्लम ये है कि सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? रिस्की है. क्यों? बिकॉज एक्चुअली the technology becomes obsolete very fast. So obsolete मतलब क्या? old हो जाना, old and rejected. होता क्या है? I hope you are aware, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा. So the things change very fast. अगर आपने देखा होगा, जैसे पहले मोबाइल फोन्स 5 years बैक जो मोबाइल फोन आता था, और अभी जो मोबाइल फोन आता है 2018 में, 2023 में, you must have seen huge difference. देखा है कि नहीं आपने डिफरेंस? लाइक कैमरास बहुत अच्छे क्वालिटी के होंगे 5 साल के अंदर, सेम रेट में आपको और ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी, फीचर्स, a lot of more frequency, RAM बहुत अच्छा मिलेगा. So there is a concept also called as Moore's law in electronics industry, electronics engineering. तो उसे पढ़ाई भी जाते हैं कि number of transistors keeps on doubling etc. तो होता क्या है कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है. मतलब एक्चुअली द टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन एक्चुअली चेंजिंग वेरी फास्ट. तो अगर आपने किसी में इन्वेस्ट किया, अगर उसमें सेल नहीं हुआ, तो कुछ दिन बाद वो नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा. Yes, that is why it is considered as riskiest. That if you have invested in semiconductor and you came up with some actually some product, and if your product is unable to be sold, I mean in the next 6 months or 1 year, it might become obsolete very fast. पुराना हो जाएगा बहुत जल्दी, और जब चीजें बहुत जल्दी पुरानी हो जाएगी तो फिर आपका सेल नहीं होगा, इसलिए कि फिर नया टेक्नोलॉजी लाओ, फिर खर्चा करो, फिर नया टेक्नोलॉजी लाओ. So that is the big issue with this. ठीक है, that you should be knowing it. फिर एक और नीचे में आर्टिकल थी, यूपीआई पेमेंट रिलीफ फॉर यूजर्स, हेडेक फॉर बैंक्स. अच्छा, एक क्वेश्चन है यूपीआई से रिलेटेड. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हैज बीन डेवलप्ड बाय सेबी, एनएसई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बताइए, सबको लाइक बटन प्रेस कर दे जाओ. एवरीवन एटलीस्ट 35+ लाइक्स ले जाओ. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, जिससे आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो, पेटीएम वगैरह से पे करना, वही तो है यूपीआई. तो उसको ओरिजिनली किसने बनाया था? गौरी परम खोज, सानिया अंसारी, प्रिया चवन, यू ऑल आर राइट. सी इज द राइट आंसर. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो इट इज एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इसको आप जो डिटेल पढ़ लीजिएगा एनपीसीआई के बारे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज इन फैक्ट अ डिवीजन ऑफ आरबीआई. ठीक है,
Yes. Okay. Yes. You should be knowing it. तो इसी के बारे में उन्होंने बात किया कि what are the issues around NPCI, UPI and all. कि they have made limited transaction. कि 20 से ज़्यादा transaction नहीं कर सकते हो. The amount should not be more than 1 lakh per day and all. So that is what is being talked about. अगर आप देखो कि इसमें कुछ ग्राफ्स हैं, देखो आप रिसेंट ईयर्स में UPI ट्रांजैक्शन कितना ज्यादा बढ़ गया है ना. So it has gone increased by leaps and bounds, है ना. देन आप देख सकते हो यहाँ पर UPI ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा किसे फोन पे से हुआ, उसके बाद फिर गूगल पे से, फिर पेटीएम से, है ना. सो दीज आर सम ऑफ द ग्राफ्स. तो रेमिटर बैंक्स कौन सा है, SBI सबसे ज्यादा है, फिर HDFC एंड अदर बैंक्स आर देयर. सो इसमें है कुछ चीजें, अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है कि क्या क्या उन्होंने इश्यूज बताए हैं यहाँ पर, तो अब उतना नहीं जाना, बट हाँ बेसिक आइडिया होना चाहिए UPI ट्रांजैक्शन का, है ना. अब देखो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा UPI का है, ये वाला UPI का है ना. फिर उसके बाद देखोगे, उसके बाद नेफ्ट का इतनी सी है, नेफ्ट RTGS एंड ऑल, और ब्लू वाला जो है अदर्स वगैरह है, बाकी ये लाइट ब्लू वाला प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है. तो सबसे ज्यादा UPI से ट्रांजैक्शन हो रहा है, डिजिटल वाला, है ना. पेटीएम, फोन पे एंड ऑल, है ना. ओके, एक और आर्टिकल है, क्लाइमेट लॉसूट अगेंस्ट डेल्टा एयरलाइंस. देखो डेल्टा एयरलाइंस ने ग्रीन वॉशिंग, देयर इज एन एलिगेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग अगेंस्ट डेल्टा एयरलाइंस. आजकल ग्रीन वॉशिंग काफी ज्यादा न्यूज में है, ठीक है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स डेल्टा एयरलाइंस इज इन द न्यूज, सो यू शुड बी नोइंग इट. देखो होता क्या है, ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है रॉन्ग क्लेम बाय कंपनी that my product is eco friendly, ठीक है. इसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग. नहीं, कोई कंपनी कह रही है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन नहीं करता है, लेकिन रियलिटी ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है. ओके, दैट्स कॉल्ड एज ग्रीन वॉशिंग. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो देयर इज एन एलिगेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग अगेंस्ट डेल्टा कंपनी. डेल्टा एयरलाइन एक्चुअली US की कंपनी है. सो दे हैव क्लेम्ड दैट दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरलाइन. So डेल्टा एयरलाइन ने ये क्लेम किया है कि दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरलाइन, यानी टोटल ओवरऑल जितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं. अब क्या उन्होंने क्लेम किया, लेट्स वेट. सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. नाउ देयर इज अ केस अगेंस्ट इट, फाइल्ड अगेंस्ट इट इन द US अगेंस्ट दिस की देयर क्लेम इज रॉन्ग एंड ऑल, ठीक है. तो इसी को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं कि इफ इट इज प्रूवन रॉन्ग देन इट विल बी कॉल्ड एज ग्रीन वॉशिंग, ठीक है. कि आप क्लेम कर रहे हो कि पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं, तो बट रियलिटी कुछ और है, सो दैट्स कॉल्ड एज ग्रीन वॉशिंग. द नेक्स्ट इज पेज नंबर 12 में, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस अर्जेंट हियरिंग ऑन प्ली सीकिंग आर्मी प्रोटेक्शन फॉर कुकीज. तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना. दैट सुप्रीम कोर्ट सेड विल बी हियरिंग ऑन 3rd July एंड द मैटर इज प्योरली लॉ एंड ऑर्डर इशू, है ना, ठीक है. सो PM मोदी इज ऑन अ विजिट टू USA, है ना. सो लेट्स वेट, व्हेन देयर विल बी फर्दर न्यूज विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. अब चलो ये क्वेश्चन बताओ, इंटरनेशनल योगा डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एनुअली ऑन 21st June since 2013, 14, 15, 19. व्हाट इज द राइट आंसर? क्या सही जवाब है? सबको लाइक बटन प्रेस कर दो गाइस. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को कब से मनाया जा रहा है? सिंस व्हेन? यस, वेरी गुड, गौरी इज राइट. 2015 से मनाया जा रहा है. सो इट इज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन 21st June 2015, ठीक है. सो द राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ज्योति कुमार इज आल्सो राइट, गौरी इज राइट, सानिया अंसारी, जोया खान, यस. सो 21st June 2015 से मनाया जा रहा है. Since in 2014 a resolution was passed in UN General Assembly and for the first time it was celebrated on 21st June 2015. ठीक है, मैंने बताया भी है. This I have told you that 21st June is the longest day of the year in Northern Hemisphere and that is why it is very very important. You should be knowing it. China blocks proposal at UN to blacklist 26/11 terror attack accused Sajid Mir. इसमें क्या न्यूज में पढ़ना है, ये चीज पता होना चाहिए. ये वाला UN Security Council Resolution 1267. This you should be knowing it. Okay, so this resolution actually talks about declaring terrorist and all. Okay, like Osama bin Laden, Al Qaeda, etc. So just have an idea about that. तो ये इस sanction committee के बारे में पढ़ लीजिएगा. So China has blocked the resolution. So that is why you should be knowing it. Okay. So I hope you are aware UN Security Council में 5 permanent members हैं. Even they have veto power. I have discussed it so many times.
So if one will say no, it becomes no and all, है ना? Okay, yes. India's first Omicron specific mRNA vaccine approved by DGC, Directorate Control, Drugs Controller General of India is Gemco-Vac OM, Zycov-D, RTSS, none of the above. बताइए. सबको like button press कर दो everyone. Please press the like button. At least 35 plus likes ले जाओ. Yes. What is the right answer to this question? First Omicron specific mRNA vaccine. कौन सा बना है? Yes, very good. In fact, यहाँ पे OM लिखा हो तो आप समझ गए. Gemco-Vac OM. ठीक है. So आपने देखा होगा this was actually there. India's first mRNA vaccine for Omicron variant, Gemco-Vac OM, developed by Genova Biopharmaceuticals Limited, Pune. ठीक है. So that you should be knowing it. One is the right answer. अच्छा, ये क्या चीज का कोई बता सकता है? Can anyone tell me about the third one? This is a vaccine. This is also a vaccine for what? कौन सी बीमारी के लिए? RTSS. कोई बता सकता है? So if you do not know it, please write after the class is over. Write it in the comment. नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जो स्टैटिक कमेंट होता है, कि RTSS जो है वो क्या चीज के लिए वैक्सीन है? यस, मलेरिया के लिए. वेरी गुड. परम खोज गौरी, वेरी गुड, फैंटास्टिक. हाँ, ओके, यस, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. सबको like button press करते जाओ, share this video and subscribe to our channel. Thanks for watching. Have a nice day.